कोशिश करांगा कि मैं हिंदी ते पंजाबी च गल करां। जोड़ा टॉपिक जोड़ा आज असी डिस्कस करन आले हां, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि नोबल प्राइज़ के बारे च पता होना। तुसीं मैनूं यह दसो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया गॉट ए नोबल प्राइज़? क्योंकि अभी आप फिजिक्स की एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस में आए हो, तो फिजिक्स में सबसे और एनी साइंस और टेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में इंडिया को लास्ट नोबल प्राइज़ कब मिला था? और जो इंडियन हो इंडिया में रहते हो, नॉट इंडियन ओरिजिन, बताइए। हाँ बोलो, साइंस में बोलो। हैं? चलो ठीक है। So last one in science was got, I said, not the Indian origin. The first last Indian who got the Nobel Prize in physics was C.V. Raman. उसके बाद से हमको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है साइंस में जो कि इंडियन हो इंडिया में होता है। So I will try to touch that one. Why I am going to talk about Nobel Prize? Because I come from Sweden, where I am living from last 32 years. एंड नोबेल प्राइज जो देता है वो स्वीडन देता है, ये पता है ना सबको। तो नोबेल प्राइज जो स्वीडन देता है, तो नोबेल प्राइज कैसे मिलता है और उसके लिए हमको क्या करना है, उसके क्या रूल्स होते हैं, आपको तो शायद नहीं पता होंगे, इवन हमारे फैकल्टी को भी नहीं पता है। तो आई विल ट्राई टू टेल यू दैट हाउ द नोबेल प्राइज पीपल गेट, व्हाट आर द रूल्स लिटिल बिट, और नोबेल प्राइज का एम क्या है। सो नोबेल प्राइज जो देते हैं हम लोग, दैट वाज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वो था जिसने 350 पेटेंट्स दिए उसके बाद। आजकल के ज़माने में इतने पेटेंट्स नहीं होते, 1% के बाद उस समय में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेटेंट था उसके पास डायनामाइट का। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दैट वाज डन बाय अल्फ्रेड नोबेल। और अभी हम जब बोलते हैं कि जब स्वीडन हैज डन लॉट ऑफ इन्वेंशन आल्सो, सो बेस्ट इन्वेंशन व्हिच स्वीडन हैज डन इज द नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज इज द अल्टीमेट गोल है, किसी भी साइंटिस्ट का एक अल्टीमेट जो गोल होता है नोबेल प्राइज लेना, एंड यू शुड ऑल एम फॉर दैट। और नोबेल प्राइज हमेशा बेसिक साइंस के लिए दिया जाता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसमें मैथमेटिक्स भी इंक्लूड नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और मेडिसिन में दिया जाता है नोबेल प्राइज। सो उसका जो नोबेल प्राइज है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नोबेल प्राइज देता है। और उसके कुछ रूल बताना चाहूँगा आपको। So Alfred Nobel जो था, he was born in 1833 and he died on 1896, and he comes from a family who lives in Stockholm, and this is his, actually, if you can see that building. So this was his home, if you see that, this was his home, where Alfred Nobel used to sit. And this name of the street is the Norrlandsgatan. Gatan means the street in Swedish, in English. Okay. So this street is still there and his house is still there. And when Alfred Nobel died, he wanted that whatever the wealth he has, जो उसकी जो संपत्ति थी, जो उसको हमको यूज करना है पूरे विश्व के भलाई के लिए यूज करना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बेटरमेंट के लिए उन्होंने ये किया कि विश्व में किसी को भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली जो स्वीडन से आएगा उसी को नोबेल प्राइज मिलेगा। ये उसकी विल है, which you will not understand because it's written in Latin. और
This was written on 27th November 1895. So अल्फ्रेड नोबल ने जो अपनी विल लिखी थी और उसमें उसने बात कही थी कि मेरा जो wealth है it will be used for people who are doing better for the country, for the world. So basically this is a life history of Alfred Nobel. He was born in 1833 in Stockholm, and you can see that he was moving. He done the dynamite in 1865. Then he moved to San Romeo in Italy, and he died in Italy. He didn't die in Sweden in 1896. And the first Nobel Prize was given in 1901. So at that time, the lawyer want to change his will. This is that why Nobel Prize is given to the all over the world. It should be a Swedish money, so it will be ये केवल स्वीडन को ही दिया जाना चाहिए. But lawyer at that time Sweden king want to change his will. But lawyer ने king को बोला कि नहीं, you cannot change anybody's will. Whatever he has written, we have to follow. तो उसने will को change नहीं किया और Nobel Prize is given to people all over the world. सोचो कि अगर वो उस समय लॉयर बोलता चलो किंग कह रहा है तो कर लेते हैं, but then Nobel Prize will be not that famous. So that was a good thing they done actually. So that they have not listened at that time. So Nobel Prize in physics, it's always difficult. Nobel Prize is because it's given for the invention. But if you look at the chemistry में जो Nobel Prize है, it can given to discovery as well as improvement. अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ बनाया है उसको आप improve कर सकते हो तो आपको केमिस्ट्री में Nobel Prize मिल सकता है, but फिजिक्स में नहीं. फिजिक्स में आपको Nobel Prize you have to invent new, then you will get a Nobel Prize in physics. And then they have started. The third one was in medicine. But now you can see that there are many which are basically given in the memory of Alfred Nobel, like Nobel Prize of Peace or Nobel Prize in Economics. Economics Nobel Prize is not given by Royal Swedish Academy of Sciences. It was given by Swedish Bank. So Nobel Prize in Physics, Royal Swedish Academy of Sciences gives same as chemistry, but medicine Nobel Prize, that there is one of the famous institute in Sweden called Karolinska Institutet. So that gives Nobel Prize in medicine, and literature is given by Swedish Academy, which is basically leads with the arts, and the peace is given by Norwegian Parliament. So this prize is not given by Sweden; it is by Norway. Because when Alfred Nobel died, at that time Norway was a part of Sweden. So Norway became an independent country in 1925. So that's why the Nobel Prize is given for peace in Norway. Alfred Nobel died at that time. Nobel Committee, उसमें क्या होता है कि 5 मेंबर की कमेटी होती है, कोर कमेटी जो डिसाइड करती है, और ईच मेंबर का टर्म 3 साल होता है. दे कैन गो मैक्सिमम 3 टर्म. तो आप नोबल कमेटी के 5 मेंबर में आप मैक्सिमम 9 साल तक रह सकते हो, और उसमें 3 साल तक यू कैन बी चेयर ऑफ दिस 5 मेंबर. एंड देन दे ज्वाइन अदर मेंबर्स. समटाइम्स दिस 5 पीपल they cannot be expert in all areas. Suppose in physics is very broad also. तो फिजिक्स में वो सब लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसमें 3-4 मेंबर उसमें एक्स्ट्रा रखते हैं हर साल नोबेल प्राइज के. अगर इस साल का देखोगे तो या पिछले साल का देखोगे, देयर वाज ए एक्स्ट्रा मेंबर, हिज नेम इज ओले एरिक्सन. ही इज माय कॉलीग एंड ही इज नाउ प्रोफेसर एट IIT Roper in physics department. So he was last year or this year, he was also the chair of the Nobel Committee Physics, which has given the Nobel Prize last year, this year in 25. And he was also expert
for 24 when machine learning and AI has got the Nobel Prize in physics. जो नॉमिनेशन कौन नॉमिनेशन कर सकता है? Every year the Nobel Prize is given on the 10th of December. 10th of December को इसलिए दिया जाता है क्योंकि on that day Alfred Nobel died. So it is a death anniversary, not the birth anniversary. अगर इंडिया में होता तो वो बर्थ में रखते हैं, डेथ में तो सब होते हैं, but they celebrate his death by giving Nobel Prize. So it was happened very recently on 10th of December. तो इसमें ये लोगों को इन्विटेशन भेजा जाता है क्योंकि नोबेल प्राइज हैज टू गिवन बाय every year, so we cannot invite anybody to self-nominate. You cannot apply for Nobel Prize. Somebody has to nominate you. Who can nominate? So these are the list which you can see on the screen. These people can nominate or they get a special nomination. तो उन लोगों को nomination भेजा जाता है कि आप nominate करिए. कभी-कभी हमको ये भी लगता है कि जब इंडिया से अभी नोबेल प्राइज नहीं मिला तो मे बी देयर इज नो नॉमिनेशन इज गोइंग फ्रॉम इंडिया. क्यों नहीं जाता है कभी-कभी? क्योंकि कभी-कभी हमको लगता है कि वी इंडियन आर वेरी सेल्फिश पीपल एंड वी आर वेरी जेलस पीपल. अगर मैं अपने दोस्त को कभी नॉमिनेट नहीं करूंगा कि उसको नोबेल प्राइज मिल गया तो मेरा तो डिपार्टमेंट में हालत ही खराब कर दूंगा. तो इसलिए हमको एक दूसरे से जेलसी नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है. अगर वहाँ पे कोई नॉमिनेशन जाएगा ही नहीं, हाउ इंडिया विल गेट नोबेल प्राइज? तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना है. अगर मेरा कोई फ्रेंड अच्छा काम करता है तो वी शुड सपोर्ट देम एंड वी शुड एनकरेज देम. सो दिस थिंग यू हैव टू थिंक ऑलवेज इन. So we invite nomination and the last date of nomination is always 1st February and award date is also 10th of December. And then you can see the process. So they already start after the Nobel Prize, the process already start for nomination after 10th of December. So you get everything, nomination is finished by 31st of January and then it is presented in the physics class of section and the final meeting is done in August and then they announce the results in the October. And this will be ceremony is on 10th of December. So Nobel Prize, it can given maximum people. It cannot given to 4 people. So sometimes it's a problem because if some discovery has done more than 3 people, either they have to give 2 years the same Nobel Prize. If they cannot give to a last one, they will not do because that will create controversy. So maximum 3 can get the Nobel Prize. And sometimes this money is shared between equally and sometimes it depends their contribution for that invention. So money wise it's not very big money. It's a 10 million Swedish krona. And but the prestige wise is very good. और इसमें क्या होता है, में सीक्रेसी है 50 years का. अगर कोई आपको फैकल्टी या कोई आपको बताता है कि आई वॉज नॉमिनेटेड, ही इज लाइंग. क्योंकि अगर मैं नॉमिनेट करता हूं, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आई एम नॉमिनेटिंग. वी हैव टू साइन ए सीक्रेसी. So how the person can know that I was nominated or I was shortlisted? If somebody say that, is lying. 50 years का सीक्रेसी है. हाँ, आज 2025 में जो नोबेल प्राइज मिला है, आप 2075 में पूछ सकते हो कि किसने उसको नॉमिनेट किया था, कितने और लोग थे वहाँ पे, और किसने किसको सपोर्ट किया था. ये you can know in 2075 for this year's Nobel Prize. तो इसलिए किसी की बातों में आना नहीं है और कि आप मैं नॉमिनेट हुआ था जो बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग. सो नोबेल प्राइज जो
not given for lifetime achievement. So you have to do invention or do some improvement or accomplishment. And more important is that if you read the last, Nobel Prize encourage free research driven by curiosity. हम आप बच्चों को क्यों बता देंगे कि you are the most curious. तो स्कूल में जब अपने टीचर से काफी क्वेश्चन पूछने चाहिए आपको. So curiosity drives the basic science. अगर आप स्कूल में अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, then you don't understand. You have to be curious. कभी-कभी टीचर यहाँ बैठे होंगे, वो अपने बच्चों को मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर बच्चों को बिठा देती है. तुम ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो. तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला के बताएंगे कि तुम्हारा बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है क्लास में. So you don't listen to them. Be curious, and curiosity will drive the statement given by your supervisor. So research should be driven by curiosity. And when you are most curious when you are in the school. तो आपको curious रहना. So this was the Nobel Committee I showed you for 2011, and you can see the person sitting in the center. His name is Professor Börje Johansson. So he is my teacher, and he's from the physics department from Uppsala University, and here I worked before joining the director. So he is my group leader also. So this was the 2011 Nobel Prize Committee. And then you can see that, as I told you, कि नोबेल प्राइज जो पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? एक्सरे के लिए. जो आप एक्सरे कर जाते हो डॉक्टर के पास जब एक्सरे करता है, 1901 में जब फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो एक्सरे के लिए मिला था. ये सेरेमनी क्या होती है? हमारे सिटी हॉल है स्टॉकहोम में, वहाँ पे ये सेरेमनी होती है, वेयर किंग कम्स एंड गिव द नोबेल प्राइज. तो ये उस 1901 का पिक्चर है, व्हेन द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन. And this is the picture of very recent Nobel Prize. So you can see that our king, he's the king. Here he's the king sitting, and then his queen beside him, and then third lady. This is the mother. So here you can see that in center you have a king, then king's mother, and the king's wife. So they are there on the ceremony, and here you can see more picture where the two princes are also sitting, and their son also sitting. And this is the one of the picture from the Nobel dinner. Why physics is important? You know, if you get physics Nobel Prize, then you will sit beside Queen in the dinner. So you can judge who is sitting beside Queen. He got the Nobel Prize in physics. So physics is very prestigious award. So I will not take much more time. Only I want to say that you should be curious. And this is a Nobel Prize because we are all talking about AI. Everybody is talking artificial intelligence. The last year, 2024 Nobel Prize was given for artificial neural network or machine learning. And you can say, what is physics? Because when we make AI models, we use physics. So we are using a statistical model, or that is physics behind AI or machine learning. So इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था हॉपफील्ड को और इंटेल को. And it's written the citation for fundamental discovery and invention that enable machine learning with artificial intelligence. So this was the last year Nobel Prize winner. And I was 2 days back. I was in Chennai. So this is one of the Nobel laureate from 2023 from chemistry, Professor Bevendy from MIT, USA से आए थे वहाँ पे. So then I led the panel discussion on quantum materials and intelligence. क्योंकि आजकल सब लोग क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके ऊपर एक डिस्कशन था. And the guy
to whom I'm giving this. This is a memento from IIT Roper. So I was reading. So he is a chemistry Nobel laureate of 23. And he got a Nobel Prize for quantum dot. आजकल क्वांटम एलईडी की बात सुनते हो, इट्स रिलेटेड टू एलईडी, क्योंकि आज जितनी भी लाइट आप यूज कर रहे हो वो एलईडी वाली लाइट है, या आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, या आपका टीवी स्क्रीन एलईडी. सो एलईडी इज आल्सो कनेक्टेड विद क्वांटम डॉट. एलईडी गॉट नोबेल प्राइज बिफोर क्वांटम डॉट. LED got a Nobel Prize in physics, and the people was from Japan, and this is the chemistry people they got afterwards. And this work is also with the quantum dot. Quantum dot can be used as a solar cell also. And this is the Nobel Prize winner of 2010, and who got the Nobel Prize for graphene in 2010. And at that time, Nobel Committee chair was my boss, Professor Chivas. And it was given in 2010 with the Nobel Prize graphene के लिए मिला. So thank you.